Okay, we are live. Hello, good evening, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel. We are back with another live Hindu analysis. Today is 14th of October. It's the start of a new week. It's a Monday evening. How are you guys doing? Devansh is here. Good evening. If you guys are here, please let me know in the chat box. Shiven is here. Devansh is here. Kashish is here. Good evening, guys. Very good evening. Devyansh is here. Good evening. Mishika is here. Good evening. Let's wait for a few more seconds. Let more people join the stream. Till then, how's your preparation going? When we talk about current affairs, when we talk about GK. Okay. Devansh is saying what is the strategy for the last 1 month? We'll have an exclusive session on that, a full-fledged session on the last 1 month strategy. And we'll discuss that. अभी तो टाइम है अभी तो 1.5 month है Alia is saying, are the class timings going to change? कल बताता हूँ ये मैं आपको कल ये सस्पेंस मैं क्लियर कर दूंगा whether the class timings are going to change or not. I'll let you know tomorrow in tomorrow's class. ठीक है तो कल तक का टाइम दो मुझे Okay, we have 11 people on the stream. Let's wait for a few more seconds. Till then, how's your preparation going, guys? On a scale of 0 to 10, let's do a quick self-check-in analysis. How is your preparation going when you talk about GK and current affairs? Devansh is saying, what is your opinion? My opinion on what? On the last month's strategy? Chalo, let's talk about that after the analysis so that everyone can be party to that discussion. They were saying today's newspaper is very interesting. ठीक है अच्छी बात है if you find it interesting. Devansh is saying 9. Mishika is saying 7 on 10, gaining momentum but still feeling unsure. Priyanshi is saying the classes for the subjects that happen at 8, they will restart from the very beginning after this year's CLAT for the 2026 batch. They have already started. Priyanshi, they have already started. And yes, the frequency would definitely increase. The schedule would definitely be modified. And you would be made aware of all the changes. So yes, everything would be covered once again. Good evening, Deeptakshi. Chalo, we have enough viewership now. We have enough people watching the stream. So once again, welcome to the class, guys. Good evening. And I hope the last week was good for you. The last week was productive for you. You enjoyed your Dashera and related festivals and are now geared up for this week's preparation. इस week के क्या क्या goals हैं सबके जल्दी से एक बार one line में मुझे chat box में बता दो before we start today's session. What are your weekly goals for this particular week? ओवरऑल बता सकते हो या करंट अफेयर से रिलेटेड भी बता सकते हो योर विश आलिया सेइंग एनालिसिस क्लासेस ऑफ सैटरडे एंड संडे नॉट पोस्टेड ऑन चैनल ऐसा है क्या वेट आई विल चेक इज दैट द केस चलो आई विल सी टू दैट आई विल लेट यू गाइस नो क्या स्टेटस है उसका Okay, Mishika is saying finished 12 out of 41 topics I have shortlisted, trying to catch up on the backup. Okay, ठीक है, चलो, wonderful. Let's start today's session, guys. Let's begin today's Hindu analysis. If you guys are ready to start, can I get a quick and enthusiastic ready in the chat box? Very quickly. Ready in the chat box? Devansh is saying trying to finish the topics. Updating GK, revising legal, practicing more English and logic, analyzing mistakes, and of course, not forgetting quad. That sounds perfect. That sounds fantastic, Diptakshi. Chalo, theek hai. If everyone is ready, then let's begin today's analysis session. 14th of October, it's a Monday.
ऑल द नोबेल पीस प्राइज पे सलीक सर एक एक्सक्लूसिव क्लास ले चुके हैं, बट क्योंकि मैंने ये मेंशन नहीं किया था अपने हिंदू एनालिसिस में, सो फॉर पीपल हु माइट हैव मिस्ड दैट क्लास, आई जस्ट पिक दैट टॉपिक. विल जस्ट briefly talk about who won the Nobel Prize, what is that organization, why they have won the Nobel Prize, etc., etc. Then we have the KAVACH system. We have an interesting editorial article on the KAVACH system, which is related to प्रिवेंशन ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स. रिसेंटली एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था 11th of October को. अ पैसेंजर ट्रेन कोलाइडेड विद अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन एंड काफी सारी बोगीज डीरेल हो गई थी. अनफॉर्चुनेटली नो वन लॉस्ट देयर लाइफ, बट मेनी पीपल वर इंजर्ड. सो कवच इज अगेन इन न्यूज, एंड द आर्टिकल not necessarily just talks about Kavach, it also talks about how Kavach is not the only solution, how we need to work on other things to improve our railway safety and ensure that no more accidents happen. Then we have an interesting article on the RTI Act, which is your right to information, which was brought into place in the year 2005. So it's entering its 20th year of existence. What are the challenges related to the RTI Act? What are the shortcomings in the RTI Act? How is the government trying to repress the RTI Act? We'll have a discussion on that. Then we have the front page headline news. Israel has rammed the gate in South Lebanon, जहाँ पे UN peacekeeping forces were present. So that is on the front page of the newspaper. We'll have a short discussion on that. And there's an editorial article on the relationship between India and China. This is in context of the Quad summit, which happened in September. We all know what is the Quad, and we all know that India and China's relationship as of now, bilateral relationship, is not the best. So we'll have a short discussion on that. And then, of course, we'll have our 3 new vocabulary words. So that is the agenda for the day, and we are ready to start. So let's start with the discussion. Nobel Peace Prize is awarded to the Japanese organization Nihon Hidankyo. Can anyone tell me when was this organization established? If you guys have attended Salik Sir's class, you must be knowing this factual piece of information. Mishika is saying no फटाफट facts. नहीं, आज नहीं फटाफट facts, कल करते हैं. 1956 is the correct answer, absolutely. तो ये जो organization है, this is an organization which propagates, which promotes the denuclearization of countries, and mostly it is composed of survivors of the atomic bombings which happened in Hiroshima and Nagasaki. Can you guys tell me the dates? Do you guys know the dates? When did the atomic bomb drop on Hiroshima and Nagasaki? Date as well as the year. क्या आप लोगों को पता है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्वाइवर्स जो हैं इस पर्टिकुलर बॉम्बिंग्स के, जो एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएस ने जापान में, इनको बोला जाता है हिबाकुशा. द सर्वाइवर्स आर कॉल्ड हिबाकुशा. इन जापानीज they are called hibakusha. The English translation is survivors of the atomic bomb. And in logo ने ये organization बनाया, which is called Nihon Hidankyo. Nihon Hidankyo का English translation भी यही होता है, Japan Confederation of Atomic and Hydrogen Bomb Sufferers Organization. And इनको मिला है Nobel Peace Prize for their efforts in sensitizing other people about the benefits of denuclearization and raising awareness about the devastating impacts of nuclear weapons and how we should create a world which is free from the race of nuclear arms. ठीक है, तो यही था फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. इसके अलावा एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड पीस प्राइज पहले भी 2 बार दिया जा चुका है. Once it was awarded to one of the former Japanese PM whose name was Isaku Sato. So this gentleman has also won the Nobel Peace Prize. He was a former Japanese PM. ठीक है, इनका भी यही रोल था. इन्होंने बहुत प्रमोट किया था कि भाई नॉन न्यूक्लियराइजेशन करना चाहिए. इसके अलावा देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स. नेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ICAN. इसको भी मिला था नोबेल प्राइज फॉर सिमिलर रीजंस. ठीक है, सो ये है हमारा फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. 6th and 9th August 1945 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जवाब. यूएस ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बॉम्ब, जिससे फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया था.
ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज पीस पे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम आज के, विच इज द कवच सिस्टम. When did the implementation of the kavach system start? Can you guys tell me the year? कवच का implementation किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? The last time we had a discussion on kavach, we were discussing that if we go on the same pace at which we are installing the kavach system, it would take more than 100 years to complete the entire installation, which is quite a concerning fact. अब ये वाला आर्टिकल क्या बात कर रहा है? This is of course in context with the train accident which happened recently on October 11th. Passenger train colliding with a stationary goods train and 13 bogies got derailed. This happened in Chennai. चेन्नई के कवैरापेट्टई एरिया में. दिस इज द नेम, कवैरापेट्टई. कैजुअलिटीज तो नहीं हुई बट मेनी पीपल गॉट इंजर्ड एंड अगेन इसमें फिर कवच लाइमलाइट में आ गया. कवच इज अ ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बाय द इंडियन रेलवेज. जुलाई 2020 इज द करेक्ट आंसर. अगर आपसे टेस्टिंग पूछा जाए तो टेस्टिंग का ईयर था 2016, ट्रायल स्टार्टेड इन 2016, द इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड इन 2022 एंड अभी हम बहुत कम ही जो है लेंथ एंड ब्रेथ कवर कर पाए हैं ऑफ आवर इंडियन रेलवेज विच आर प्रोटेक्टेड बाय द कवच सिस्टम. एंड दिस आर्टिकल अगेन रीइटरेट्स द फैक्ट दैट कवच सिस्टम को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए टू implemented entirely in the country, we just need 2% of our capex. capex क्या होता है? capital expenditure of the budget, right? अच्छा, बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया का रेलवे बजट एंड द एनुअल बजट सेम होता है या डिफरेंट होता है? डू वी हैव द सेम बजट एज द यूनियन बजट और इज द रेलवे बजट प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट बजट? सेम और सेपरेट? टेल मी इन द चैट बॉक्स. सेम और सेपरेट? सेम होता है, एब्सोल्युटली. एंड सिंस व्हेन वाज दिस चेंज इम्प्लीमेंटेड? पहले रेलवे बजट पता है अलग होता था, रेलवे बजट अलग आता था, यूनियन बजट अलग आता था. देन दे वर merged into a single entity. When was this change implemented? Can you guys tell me the year? Okay, Mishika says 2016. Yes, of course, Modi changed it. Some sources say 2016, some say 2017. I believe it's 2016 from the sources which I checked. तो जो कमेटी थी उसका नाम भी पता होना चाहिए आपको, विवेक देबरॉय कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे ये बजट्स इंटीग्रेट हो गए थे. एंड किस टाइम सेपरेट हुए थे? चलो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है. व्हेन डिड द रेलवे बजट डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द एनुअल बजट एंड स्टार्टेड टू बी प्रेजेंटेड एज अ डिफरेंट एक्सक्लूसिव बजट? ये किस ईयर में हुआ था कि रेलवे बजट को हम यूनियन बजट से अलग रखेंगे? When was this classification done? Is it the year? Yes, it is 1924. ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हुआ था. Absolutely correct. बढ़िया यार, अच्छे से तैयारी कर रहे हो आप लोग. I like that. Pretty good. So what this article is telling is that Kavach implementation is a priority but will not be a silver bullet. Silver bullet का मतलब क्या होता है? It's not a one stop solution. एक और इसका synonym होता है silver bullet का जिसको आप बोलते हो पेनिकिया और पेनिशिया. ठीक है, तो एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है ये जिससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी. और भी चीजें, और भी डोमेन्स हैं जिन पे आपको काम करने की जरूरत है. व्हाट आर द अदर डोमेन्स व्हिच वी नीड टू वर्क ऑन? इंफ्रास्ट्रक्चर इज primarily one thing. The railway infrastructure is still not very safe as well as hygienic. Both issues are present. Then you have understaffing की problem है. There are not enough employees and the loco pilots as well as the railway staffs are overworked. They are working 12-hour shifts, which is obviously hampering their physical health as well as mental health and increasing the chance of accidents happening. तो वो भी चीज़ें हैं. उसके अलावा there are multiple other छोटी छोटी चीज़ें हैं. There are minute things such as there are no washrooms present inside the लोको पायलट्स चेम्बर, जो भी आप डब्बा कह लो उसको. in that particular bogie there is no washroom available, so the loco pilot cannot attend the nature's call if he has to while taking care of the
ट्रेन ऑपरेशंस। सो वो भी एक चीज़ है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है विच वी नीड टू सिस्टमैटिकली वर्क अपॉन अलॉन्ग विद वर्किंग ऑन द कवच सिस्टम। उसके अलावा ये आर्टिकल और भी चीज़ें बताता है एक कवच सिस्टम के बारे में कि हाउ रेलवेज आर नाउ not receiving enough revenues from its operations and they are reliant on the budget, the annual budget for getting finances। उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है कवच के इम्प्लीमेंटेशन में। जो इंडिया का रेल नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन द फ्रेट इज डिपेंडेंट वेरी मच ऑन कोल एंड कोल का, क्योंकि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो कोल का ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो रहा है, उस वजह से भी रेवेन्यूज आर डिक्रीजिंग। बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 की वजह से भी देयर वाज अ मेजर हिट इन द रेवेन्यू ऑफ रेलवेज बिकॉज ट्रैवल रिड्यूस हो गया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कवच सिस्टम के बारे में दिया गया है। कवच सिस्टम लॉन्च्ड इन 2020। इट वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय आरडीएसओ। ये मैंने क्विज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज आरडीएसओ या हु डिजाइन्ड कवच, व्हिच इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बनाया along with 3 other vendors and this has been adopted as the national automatic train protection system। ठीक है, इसमें अगर इंटेग्रिटी सेफ्टी लेवल आपसे पूछे, सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल, so that is level 4। safety integrity level 4 standards are observed in this particular technology। And another technology which it operates upon is called the RFID technology, which is radio frequency identification। RFID, radio frequency identification technology। And yeah, that is pretty much all you need to know। Yes, Michigan 1924 by the Acworth Committee, that is when the railway budget got separated। ठीक है, so आगे चलते हैं। इतना ही था इस आर्टिकल में और कुछ ज्यादा तो है नहीं। Okay, scuttling people's right to information। Right to information came through the RTI Act of 2005 and this gave citizens the right to put in RTIs through which they can seek information on things which are usually not available in public domain। This was a very empowering legislation in the manner that it gave you a lot of ability to question the government, to question the authorities as to how things are functioning, how things are operating, how they are spending the public's money। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें स्कटलिंग पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल का टाइटल इसलिए है बिकॉज दिस आर्टिकल एलिजेस दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग रियली हार्ड टू restrict the right to information, to cut down right to information and its ambit so as to not be accountable to the people। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं by which this particular thing is happening, the scuttling of right to people's information is happening। First thing is there are a lot of vacant posts when it comes to people who resolve the RTIs। ठीक है, जो प्राइमरी बॉडी होती है which heads this particular domain is called the Central Information Commission and इसके अंदर काफी सारे आपके Central Information Commissioners होते हैं who are responsible for resolution of these RTIs। तो ये Central Information Commissioners की बहुत सारी posts vacant है। That is one thing। Another thing is there is a lot of delay and backlog in answering the RTIs। Another thing is the new legislations are being excluded from the ambit of RTI Act। To give you an example, the recent Digital Personal Data Protection Act which came, that has been excluded from the ambit of RTI। उसके अलावा political parties जो है RTI के ambit से बाहर होती हैं। उसके अलावा तो नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी की कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिफेंस के कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ आरटीआई, विच आर फॉर राइट रीजंस कि भाई ठीक है, अब आप इंडिया का न्यूक्लियर कोड मांग लोगे कि मिसाइल कैसे चलानी है तो वो ऑब्वियसली आपको आरटीआई में गवर्नमेंट नहीं देंगे। बट very major concerns which should be brought to public light are being repressed by the RTI Act and the government allegedly by this article। अब इसमें बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। They are saying that there is a threat to the safety of the people who file these RTIs। They say that approximately 100 people have been killed for being RTI activists। जब आप RTI फाइल करते हो तो another drawback in the RTI Act is there is not a lot of privacy for the person who files that particular RTI। and उस वजह से आपकी सारी डिटेल्स जो है गवर्नमेंट के पास चली जाती है। the government can share those details with the requisite department जहाँ पे आपने RTI डाली है। फॉर एग्जांपल अगर आपने
मान लो आपने लोकल म्युनिसिपल बॉडी जो आपकी है सिटी की, वहां पे आरटीआई डाली है कि जो सिटी का एलोकेशन ऑफ बजट है वो कैसे यूज हो रहा है, तो आपकी डिटेल्स, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, जो भी उस आरटीआई एप्लीकेशन में आपने डाला है वो म्यूनसिपैलिटी के पास चला जाएगा, और फिर वहां से कोई ऑफिसर या कमिश्नर आ जाएगा आपके यहाँ कि भाई क्या हिसाब, क्या बातचीत है, क्या दिक्कत आ रही है, आपको बताओ, हमें बताओ। तो फिर दैट इज जस्ट tip of the iceberg which I'm telling you about, but there's a lot of blackmailing which happens, there's a lot of threatening which happens, and people are even killed for filing RTIs. A lot of such cases have come to light. तो इसमें काफ़ी सारे NGOs की, काफ़ी सारे ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे RTI सिस्टम इज बीइंग रिप्रेस्ड, इट इज बीइंग कर्ब्ड, इट इज बीइंग curtailed. ठीक है, तो चलो न्यूज़पेपर पे चलते हैं, इस आर्टिकल को एक बार देखते हैं डिटेल में, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। तो ये रहा हमारा कवच सिस्टम वाला आर्टिकल, ये हमने कर लिया कवर। These are all the challenges which are given. Staff of railway, safety of railway staff, 12-hour work shifts, absence of toilets on engines, etc. etc. कोविड पेंडेमिक की वजह से बजटरी दिक्कतें, all of those things. Then you have where is the article? Yeah, here is the article. The right to information, one of the most empowering laws, from exposing corruption, delivery of basic rights, behind the opaque electoral bond scheme. तो electoral bond scheme वाला जो पूरा controversy था, पूरा जो scam तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, but जो भी पूरा fiasco था वो, that was brought to light because of the RTI Act. So very important legislation has entered its 20th year. Vacancy of post of the commissioners, which is crumbling the system and mounting backlogs. Then you have reports of the Satark Nagrik Sangathan, which are saying that 7 out of 29 information commissions were defunct for various period of time last year. Commission of Jharkhand has not been functional for over 4 years, while those of Tripura and Telangana have been defunct for 3 years. तो यहाँ के कमीशंस चल ही नहीं रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, लोगों की आरटीआई का रिप्लाई ही नहीं हो रहा है। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र विद बैकलॉग ऑफ मोर देन 1 लाख अपील्स एंड कंप्लेंट्स इज हेडलेस, यानी कि वहां का जो हेड है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होना चाहिए वो पोस्ट वेकेंट है। 6 out of 11 पोस्ट ऑफ कमिश्नर्स आर लाइंग वेकेंट सिंस May 2015, नॉट अ सिंगल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैज बीन अपॉइंटेड। तो ये बहुत एक सिस्टमैटिक ड्रॉबैक है जिस वजह से द आरटीआई सिस्टम इज नॉट बीइंग एबल टू फंक्शन लाइक इट शुड. It is because adequate information commissioners have not been appointed. More than 4 lakh appeals are pending. ठीक है, वही सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं. और क्या क्या है? Digital personal data protection included an explicit provision to amend the RTA law to exempt all personal information from disclosure. Then there's no protection of privacy of individuals. They can invoke this section. It would cause unwarranted invasion of privacy. Information officer was satisfied. No larger public interest. Okay. Transparency International का डेटा कहता है nearly 100 people have been killed for using RTA Act. Thousands have been assaulted, threatened and slapped with false cases. Though the Whistleblowers Protection Act was passed in 2014, it remained confined to the statute books of the central government. Whistleblower क्या होता है? Whistleblower is someone who brings certain information to light. Whistleblower हिंदी में ट्रांसलेट टू सीटी बजा देना, मतलब अलर्ट कर देना. Someone who alerts about a certain wrongdoing of a person or of a department, that person is called a whistleblower. And क्योंकि by doing this you are putting yourself under threat, तो उसके लिए लाया गया था ये Whistleblower Protection Act in 2014. तो यही है कि erosion of this fundamental right is an erosion of democracy. That is what the article is saying, that these are regressive amendments and systematic drawbacks in the machinery of RTI. ठीक है, so this is the article. Let's move back to our presentation and move ahead with our discussion. Israel tanks ram gate of UN peace mission in Lebanon. तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इनके इसराइल के नेतन्याहू साहब, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा है यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को. पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि इसराइल में ही इज अ पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी कि ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इसराइल. अब इन्होंने बोल दिया है कि यूएन को टाइम आ गया है, टाइम हैज कम टू विथड्रॉ UNIFIL फ्रॉम हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्गहोल्ड्स एंड फ्रॉम कॉम्बैट जोन्स. व्हाट इज UNIFIL? इट इज द यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान. इंटरिम फोर्स इन लेबनान.
तो यूएन क्या करता है इन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एरियाज? यूएन कीप्स अ पीस कीपिंग फोर्स सो दैट डिप्लोमेटिक टाइज कैन बी इंटैक्ट, एंड वहाँ की जो एम्बेसीज वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ ह्यूमन राइट्स क्राइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन की फोर्सेज रहती है इन कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एरियाज। तो वन ऑफ द सच फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड को जो है इसराइल ने अटैक किया। दे डिस्ट्रॉयड द मेन गेट ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एट रामिया। सो रामिया इज अ प्लेस इन साउथ लेबनान, रामिया। एंड यहाँ पे इन्होंने अटैक किया है। किसी की डेथ नहीं हुई है, लाइक नो यूएन पीस कीपिंग पर्सोनल हैज डाइड, बट 15 ऑफ देम हैव फेस्ड इंजरीज एंड बर्न्स बिकॉज ऑफ द स्मोक इरिटेशन वगैरह उनको हुई है। तो इन्होंने बोला है कि वी डू नॉट वांट टू हार्म एनी ऑफ द यूएन आईएफआईएल फोर्सेस एंड वी वांट देम टू विड्रॉ फ्रॉम आवर वे, ताकि हम अपने मिशन स्मूथली कंडक्ट करवा सकें। There are approximately 10,000 peacekeepers in the UN peacekeeping force, and India is the third largest contributor to this UN peacekeeping force with around 903 soldiers. But none of these soldiers are posted in Lebanon. So that is also mentioned in this article. But yeah, this is a factual article. इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, वही है recent development in the war, and let's see how it goes. So this is about that. Then you have a interesting editorial article related to China, India, and New Delhi's Quad dilemma. Now, what is the Quad dilemma? The Quad dilemma is that how much should we engage with Quad? How much should we get closer to Quad? Which is a balancing act where we maintain proximity to the Quad as well as do not jeopardize our relationship with China. Why do we not want to jeopardize our relationship with China? What are the possible reasons we do not want China to be hostile to us? Can you guys tell me in the chat box? What could be some reasons that we do not want to take on China head on? What can be some possible reasons you guys can think of? ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से हम बहुत ही डिप्लोमेटिकली मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना? वी आर नॉट मेकिंग ओपन स्टेटमेंट्स, क्वाड इज नॉट मेकिंग ओपन स्टेटमेंट्स कि क्वाड इज अगेंस्ट चाइना। जो इन्होंने डिक्लेरेशन भी रिलीज किया था, द वेलमिंगटन डिक्लेरेशन, जो क्वाड समिट में दे रिलीज, उसमें भी किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया था। सारी बातें वही करी गई थी जो चाइना को अपोज करने के लिए हैं, बट the name of China was not taken. They talked about maritime cooperation. They talked about supplying diversifying the supply chain. They talked about increasing regional cooperation in the Indo-Pacific region. They talked about defense cooperation. Although Quad is not a defense pact per se, like the NATO. Quad is not a defense pact, but still काफी सारी defense की, regional cooperation की, maritime training की, military training की discussions हुई थी in the Quad summit which happened in September. We discussed that in detail, and उसमें जो declaration sign हुआ था which talked about the outcomes of that particular summit was called the Wilmington Declaration. So why is India not trying to, let's say, provoke China? Okay, we have some answers. Security concerns. Yes, that is a very big reason. So Quad में जब आप बाकी तीन countries को देखते हो ना, none of the three countries share a direct border with China. It's only India who shares a direct border with China on the northeastern side. ना जापान बॉर्डर शेयर करता है, ना यूएस बॉर्डर शेयर करता है, ना ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर शेयर करता है। वो तो अपना दूर दूर बैठे हुए हैं। पंगा किसका चल रहा है? हमारा और चाइना का चल रहा है। सो सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग थिंग. Then Deeptakshi is saying, do you know anything about the boot camp time schedule? Nothing is available in our aspirations portal. Okay, I'll check about this and I'll see that if we can release a telegram message or a community post regarding the time of the boot camp. मैं ये note down कर लेता हूँ. I'll take note of this and I'll let you know what is the information on this. ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ। बाकी रिस्पॉन्सेज हमारे क्या हैं? Then we have Mishika saying biggest imports exports border issues could escalate. Yes, तो अभी भी जो हमारा border issues हैं वो दो एरियाज पे अभी de-escalation नहीं हुआ है। कौन से हैं दो एरियाज? They are the Demchok region and the Dipsang plains. We have time and again talked about this, how the standoff in those regions has still not de-escalated. The tensions are still the same in those two regions.
तो वो भी है एक कि बॉर्डर इश्यूज भी हमारे चल रहे हैं वहाँ पे। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया था जब हमने पहले डिस्कस किया था, दैट आल्सो टोल्ड दैट चाइना वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर्स इन इंडिया, एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बिटवीन चाइना। तो ऐसा नहीं है कि although we are trying to counter China's presence, be it in the Indian Ocean, the Indo-Pacific region, or the South China Sea, or through Quad, or through other initiatives, the trade with China is still going strong and increasing day by day. So वो भी एक definitely reason है. Trade relations is a very strong reason. Priyanshi is saying we share border which is already in serious stalemate conditions. Yes, that's correct. Border issues might escalate. Correct. China is a very important trade partner. Absolutely correct. तो यही सारे रीजंस हैं जिस वजह से वी आर नॉट गेटिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, एंड ये आर्टिकल भी यही रीजंस को एड्रेस करता है। ठीक है, अब वी डू नॉट वांट चाइना टू डायरेक्टली कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद अस इन अ बायलेटरल वे, बिकॉज उससे हमें काफी दिक्कतें होंगी। पाकिस्तान इज अ नेबर विच इज हॉस्टाइल, देन वी हैव इस साइड बांग्लादेश इज ऑल्सो अभी इन अ क्राइसिस, श्रीलंका इज ऑल्सो इन अ क्राइसिस, म्यांमार इज इन अ क्राइसिस। सो ऑल आवर नेबरहुड इज सराउंडेड बाय weak governments or crisis related chaotic governments, right? So we do not want another neighbor to become hostile to us, and of course trade relations वाला aspect तो है ही। तो क्वाड में भी हमने जब बात करी डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन एंड ऑल की, वी डिड नॉट डायरेक्टली नेम चाइना बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रोसीड विद कॉशन, वी आर ट्राइंग टू फॉर्म बैलेंस। रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं एंड चाइना के अगेंस्ट हम जाते भी हैं, तो एक ये भी चीज है ना, ऑल्दो वी आर क्लोजर टू यूएस थ्रू क्वाड, एंड अब अगेन दिस इज again a vicious loop ki are we closer to US because we want to counter China, or because we want to counter China we are closer to US? Which way is the relationship? Is it both ways? Is it one way? So वो भी एक चीज है। तो यूएस से हम काफी सारे अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, काफी सारा ट्रेड बढ़ा रहे हैं। देयर इज I2U2, देयर इज ICET, देयर इज क्वाड, देयर इज मल्टीपल डिफेंस एक्सरसाइजेस हैपनिंग। तो यूएस से प्रॉक्सिमिटी हमारी बढ़ रही है, बट अगेन we are still proximate to Russia. We are still having good trade relationships with China. तो अभी तो हमारी डिप्लोमेसी थोड़ी नॉन अलाइन टाइप की चल रही है, मल्टी अलाइन कह लो या नॉन अलाइन कह लो, बट यस वी वुड डेफिनेटली हैव टू डू थिंग्स विच मेक अस सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट। अभी भी इंडिया के जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, दे आर वेरी हेविली रिलायंट ऑन चाइना फॉर मशीनरी। इंडिया का जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, दे रिलाई ऑन चाइना फॉर रॉ मटेरियल्स। अभी भी हम पूरी तरीके से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली चीजें नहीं कर पाए, बिकॉज पहले हम फिनिश गुड्स ज्यादा ले रहे थे चाइना से, अब हम असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं एक तरीके से, मेक इन इंडिया तो नहीं कर रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड क्रिटिकल मिनरल्स। चाइना के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो वो सारी चीजों की वजह से बहुत डिपेंडेंस भी है चाइना पे। एक रिसेंटली आर्टिकल आया था जिसमें वी वर डिस्कसिंग हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज ईजिंग द वीजा नॉर्म्स फॉर चाइनीज टेक्नीशियंस एंड ट्रेनर्स सो दैट दे कैन कम टू इंडिया एंड इम्पार्ट दोस टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि मशीनरी एंड इक्विपमेंट सारा चाइनीज है, तो वो ओवरनाइट या ओवर एन ईयर चेंज नहीं हो सकता। दैट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, दैट इज अ फेजिंग आउट विच वी हैव टू डू धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली। सो इस वजह से वी आर इन अ डिलेमा। Let's go to the article. Let's see what all issues is the article addressing. Let's see. So this is the article. China New Delhi's Quad dilemma. September Quad summit, Wilmington declaration did not mention any country. Despite absence of any reference to formal mutual defense declaration, it was obvious that the four maritime democracies had a single objective: to checkmate China. अब इंडिया चाइना के स्टेट्स कैसे चल रहे हैं, गलवान रीजन की बात करी है इन्होंने, डेप्सान डेपचौक की बात करी है, नो ब्रेक थ्रू इन नेगोशिएशंस रिगार्डिंग डिसएंगेजमेंट, पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अभी भी दोनों पार्टीज खड़ी हुई हैं, फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं, मिलिट्री इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ ऑगमेंटिंग इट्स कैपेबिलिटीज इन द इंडिया चाइना बॉर्डर। तो फेंसिंग एंड ऑल हम बढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया था कि वी माइट नॉट बी रिड्यूसिंग आवर ट्रूप्स फ्रॉम द इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, सेम रहेंगे या फिर इंक्रीज होंगे। Then you have China's arrogance, misplaced or otherwise, is legendary. China greatly depends on element of surprise to achieve best results. तो वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि चाइना अभी क्वाड पे कुछ बोल नहीं रहा बिकॉज इट कीप्स अ सर्टेन सेंस ऑफ मिस्ट्री। वो जब कुछ करता है तो बता के नहीं करता, अचानक से कर देता है। तो वो भी है कि चाइना अभी ऑल्दो रिएक्ट नहीं कर रहा,
regarding the developing situation of Quad. What is again worrying is that China under Xi seems increasingly willing in most situations to test the waters vis-a-vis its neighbors, including India. An aggressive nationalism, walk the talk, Xi Jinping's China, provocation, okay, bully, oppress or subjugate China, stern warning. तो यहाँ पे वही चाइना और इंडिया की डिप्लोमेसी की बात हो रही है. इंडिया must not overlook this aspect and read the tea leaves correctly in the dealing with China. India's strategic experts had sought differentiate between what is the Chinese mind constitute a real threat as distinct from peripheral dangers that haunt the Chinese psyche. ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो. मोर और लेस हमने जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे वो कवर कर लिए हैं. बीजिंग का व्यू क्या है इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइना's increasing concern over India's association with quants, seen by it as a US sponsored coalition of willing. Rumblings from China have grown stronger. To the favored Chinese mind of today, India's membership of Quad represents a far more serious threat than the occasional skirmishes on the Himalayan heights. तो वही चीज है कि काफी चाइना के लिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज है कि इंडिया की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है टुवर्ड्स द क्वाड ग्रुप एंड इंडिया मस्ट take due care to not send out any wrong signals as the consequences of this could be serious. We do not want to resort to confrontational politics. वही सारी चीजें हैं सेम मोर और लेस घुमा फिरा के वही बात करी हुई है. So that brings us to the end of this particular Hindu analysis session. Let's quickly do our vocabulary for the day. The first word for the day is aphorism. Aphorism simply means a pithy observation that contains a general truth. Pithy का मतलब होता है substantial, something of substance, substantial. Such as if it ain't broke, don't fix it. तो एक तरीके से आप कहावत कह सकते हो aphorism को हिंदी में. Saying, maxim, axiom sounds like an aphorism from some ancient sage. Sage कहते हैं साधु महात्मा लोगों को, and so it is. ठीक है. So that is what is aphorism, a pithy observation that contains a general truth. Ebullient. Ebullient का मतलब होता है cheerful and full of energy. Synonyms हैं exuberant, buoyant, cheerful. Antonyms हैं indolent, lazy or stolid. My father is a naturally ebullient personality. ठीक है जी. Next word is contumacious. Contumacious का मतलब होता है stubbornly or willfully disobedient to authority. ये word usually use किया जाता है defendants के लिए. डिफेंडेंट्स कौन होते हैं? जो कंप्लेन करता है, जो कोर्ट में केस करता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ. और जो उस केस को डिफेंड करता है यानी कि जो सामने वाली पार्टी होती है जिस पे एक्यूजेशन लगाया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट. तो जब डिफेंडेंट स्टबर्न और विलफुली डिसोबीडिएंट एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टुमेशियस. सिनोनिम्स आर बॉकी, कॉन्ट्ररी, डिफाइंट. एंटोनिम्स आर एमिनेबल, बिडेबल, कंप्लायंट. द जज थ्रेटन टू चार्ज द कॉन्टुमेशियस विटनेस विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है. So contumacious means stubborn and disobedient to authority. Ebullient means cheerful and full of energy. And aphorism means an observation containing a general truth. And that brings us to the end of today's Hindu analysis session. Thank you so much for attending, participating. Tomorrow is our Menti quiz, jiska syllabus hai the month of May and June. So make sure you revise your magazines, your notes, or whichever way you have prepared your current affairs for the month of May and June. कल हम करेंगे मेंटी क्विज, उस पर डिटेल्ड मेंटी क्विज करेंगे बढ़िया सा 20-25 क्वेश्चंस का, कम प्रिपेयर्ड, कम चार्ज्ड अप. We have some questions in the chat box. How many quad summit happened till now? Is it 6th or 4th? गूगल कर लो, ये सारी चीजें तो आप गूगल कर सकते हो. What is strategy for the last 1.5 months? What is your opinion? When will you get September current affairs roundup? Very soon. 14th है ना आज? आ जाएगी 3-4 दिन में. Within 3-4 days, you'll be getting that on our YT channel. So Devansh, last 1.5 months की strategy में क्या होना चाहिए? चलो थोड़ा सा discussion कर ही लेते हैं इस पर, आपने बात छेड़ दी है तो. Now that you are left with approximately 45 days, आप मान के चलो last के 15 days you would not be studying a lot of new things. So बहुत ज़्यादा आप current affairs last के 7 days में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे current affairs, but last के 15 days में भी you will reduce the frequency and you will be focusing more towards your mocks and mock analysis. So if you're not giving mocks as of now, start giving at least 2 mocks per week. That should be the first thing on your target. And not just giving 2 mocks per week, but also analyzing these mocks in depth, looking at your weak areas, your weak points, and working on them. That is one thing which should be a part of your 1.5 month strategy. The second thing is if in case you have any sort of backlog, clear it on first priority. In the next 10 to 15 days, you should clear your backlog. You should be done with your GK. And if you're done with your backlog, people who are done with your backlog, you should start with your first or second revision of current affairs.
इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो दोबारा से, क्योंकि लास्ट के 15-20 डेज में रिवीजन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. इफ यू आर डन विद फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन while you enter the last month of preparation, you would be in a much better position and equipped to have your third and fourth revision very quickly and effectively. And उसमें आपको opportunity भी मिलेगी कि if you have missed a certain topic, you can study that topic. ठीक है? So your second priority should be your revision or backlog clearing of GK and current affairs. उसके अलावा start focusing more towards your strategy. अब आपकी स्ट्रैटेजी जो है कंसोलिडेट हो गई होगी. द स्ट्रैटेजी विद विच यू अटेम्प्ट योर मॉक, दैट इज द स्ट्रैटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर कंसोलिडेट नहीं हुई है तो मेक श्योर यू लुक एट all your previous mocks and find out patterns. Which of the following attempt strategy is working out best for you? Which of the following sections are you more comfortable with? ठीक है, सो वो चीज कंसोलिडेट करो. मेक श्योर यू फाइन ट्यून योर स्ट्रैटेजी इन सच अ मैनर दैट यू आर लेफ्ट विद 5-6 minutes after attempting the paper, so that you can go through and revise everything which you have marked. And you should always have 5-6 minutes extra in case of any contingencies. अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है सेंटर पे, आपके पेपर में कोई दिक्कत है, इन्विजिलेटर से कोई पंगा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके पास 5 मिनट का बफर होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो फिर यू विल मेस अप योर टाइम मैनेजमेंट. OMR शीट फिल करने का भी टाइम आपको चाहिए ही चाहिए. साइंस वगैरह जो करवाएंगे आपसे वो सब करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए. बट अगेन उस पर अलग से डिस्कशन करेंगे कि कैसे अपना टाइम प्लान करना है ऑन द डी डे. But yes, you should consolidate your strategy as of now. The other things which you need to work on is having a very strict and very uniform sleep and diet schedule. दिस इज अ वेरी अंडररेटेड पॉइंट. बहुत लोग इस पे एम्फोसाइज नहीं करते, बट इट इज टाइम कि अब आप एक फिक्स कर लो अपना स्लीप स्केड्यूल एंड डाइट स्केड्यूल एंड उस पे स्टिक रहो, क्योंकि लास्ट में जब आप वेरी करते हो आपका स्लीप स्केड्यूल, सो योर ब्रेन टेक्स टाइम to get accustomed to it. मान लो आप you are a person who likes to study at night. You study let's say 5 hours at night and फिर आप सुबह देर से उठते. I'm talking about people who might be droppers. For school students, it might be the opposite. So whatever works for you, make sure you have a uniform sleep schedule. अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो 8 बजे ही उठो. Make sure you do not deviate from this. कि किसी दिन 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर मैं 10 बजे उठा. नहीं, वो मत करो. Make sure you make your study plan and timetable in a manner which is reasonable and fits in your schedule. ठीक है, रीजनेबल स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है. हैव योर वीकली टारगेट्स, have your daily targets and make sure that they are achievable in nature. Achievable नहीं होंगे तो फिर pile up होगा तो you will get demotivated and फिर आपकी preparation off track हो जाएगी. Make sure you do not miss your daily current affairs. अभी बहुत crucial time है. अगर अभी backlog create कर दिया आपने तो फिर बहुत दिक्कत आएगी. अभी बिल्कुल भी backlog नहीं create होना चाहिए. Daily वाले current affairs should be done on priority. उसके लिए रोज 1 घंटा आपको निकालना ही निकालना है. ठीक है, so these are few things जो अभी मुझे दिमाग में आ रही हैं. Obviously, I'm just thinking out loud as of now. और भी कुछ मुझे चीजें याद आएंगी तो मैं बताता रहूंगा आपको in the forthcoming sessions. But yes, this is how you should approach your last 45 days. ठीक है? चलो, I guess that's enough for today. Last 6 months is enough for current affairs? No, that would be a big mistake. कि अगर आप लास्ट 6 months करके जाते हो, अगर 2 पैसेजेस आ गए फ्रॉम द 4th month एंड द 5th month, एक पैसेज आ गया तो आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा. सो प्लीज डोंट टेक दैट गैम्बल. मैं जो रीजनेबल टाइम लिमिट लेता हूँ वो जनवरी से दिसंबर तक की बोलता हूँ, बट उसमें भी इफ यू आर एन एस्पिरेंट हु वांट्स 100% शॉर्ट कवरेज तो मैं उसके पीछे भी 6 महीने जाऊंगा. आई वुड स्टिल गो टिल May 2023 एज वेल, May June 2023. बट आई गेट इट कि सबके पास उतना टाइम नहीं होगा. अगर आपके पास टाइम है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जून 2023 से दिसंबर 2023 तक की, उनको भी एक नजर मार लेना, देख लेना, ताकि अगर गलती से पैसेज आ जाए तो आप एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो वहां पे बना पाओ. Why did India and also few other nations not sign the letter of UN in response to Guterres being banned from Israel despite 104 nations already signing? Again, our foreign policy ना, हम इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं. We are in a way silently, I would not say supporting, but we are not trying to oppose Israel per se. So Israel जो कर रहा है, we are not saying anything unless and until ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा gross violation वहाँ पे हो रहा है. तो अभी ये जो लेटर साइन हुआ था, इसमें जो यूएन पीस कीपिंग पे अटैक हुआ था, इंडिया ने रिसेंटली उस पर साइन नहीं किया था, बट बाद में इंडिया ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था विच सेड दैट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को जो है सिक्योर एंड सेफ रखना चाहिए, उन पे अटैक नहीं होना चाहिए. तो वहाँ पे इंडिया ने साइन किया है. ठीक है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ती है इंडिया साइन करता है, एंड जहाँ पे
हम बच सकते हैं बिना इसराइल के अगेंस्ट जाए, तो वी डू नॉट साइन दैट. ठीक है, पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड आई सी यू अगेन tomorrow in a Menti quiz and the Hindu analysis. Tata, bye bye, take care, signing off.